guys, and welcome to the show where we talk about gadgets and just gadgets. Because ये जो दुनिया है gadgets की इतनी ज़्यादा तेजी से आगे grow करती है, and on a daily basis we try lots of them. कुछ अच्छे होते हैं, some of them are really bad, but then it's my job to do all this just for you ताकि आप जब इस show को देखें, so you get the perfect idea about your upcoming purchase. कि आपको नया फोन लेना है या नया लैपटॉप या मे बी अ न्यू स्मार्ट वॉच, you get full details about all these gadgets around you. Hello everyone, my name is Gaurav aka Technical Guruji. You are watching Gadgets 360 with Technical Guruji. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. Now guys, for the biggest story, I would say the most important gadget of the week, I have this. Now this is all new Apple Vision Pro. It's a computer जिसको आप अपने चेहरे पे पहन लेते हैं और उसके बाद में in your own space creating amazing virtual environments आप बहुत interesting तरीके से computing कर पाएंगे. This is only in the US for now. Apple ने इसकी अवेलेबिलिटी को बहुत लिमिटेड रखा है, but I have this in the studios just for you, just to tell you कि आखिर ये कैसा है, how is the experience और क्या complete features हैं about this Apple Vision Pro. And आपको पता चलेगा the way I am holding this because this is the battery pack. ये अलग से आपको कैरी करना पड़ता है, तो you can keep it in your back pocket, let's say. और फिर जब आप इसको पहनते हैं, you enter a complete different world जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं by just using your voice, your hands and your eyes. Let me wear this up और फिर आपको बताता हूँ कि आखिर क्या फीचर्स हैं of this Vision Pro. Now you might have noticed कि मैंने हवा में कुछ प्रेस किया and I was just entering my password and the password was very simple. It was 1 2 3 4. But the fact is that I can see the cameras. I can see this camera in front of me. I can see this camera in front of me. And at the same time, I can do some amazing things while I'm being, in this environment जहाँ पे मैं बहुत interesting तरीके से अपनी पूरी computing needs को पूरा कर सकता हूँ. So guys, first let's have a closer look at this Vision Pro and let's figure out that what all goes inside this device to make it so powerful. Tech specs की बात करें, you get to choose between 3 storage variants, 256GB, 512GB and 1TB. But within the headset is an M2 chip that also powers some of Apple's best laptops, यानी 8-core CPU, 10-core GPU, 16 cores for neural engine and 16GB of unified memory. This chipset runs the OS whilst also executing advanced computer vision algorithms. And to process the real-time data that the sensors on the device generate, there is a brand new A1 chip on the device. How does the Vision Pro track and 3D map the world and you? इसमें 2 high-resolution main cameras हैं, 6 tracking cameras on the outside, 4 cameras near the eyepiece जो wearers की eyes को track करते हैं. Eyes को track करने के लिए there is an array of LEDs and infrared cameras as well. On top of all of these, there is a true depth camera, a LiDAR scanner, a flicker sensor, an ambient light sensor and 4 inertial measurement units. जब आप इसे पहनते हैं, you get 2 micro LED displays for each eye. And ये साइज में काफी छोटे हैं, पर इनका individual resolution 4K से भी ज्यादा है. ये specifically designed 3-element lens है, which helps the display surround you after you've used the light blocking mechanism properly. And to hear what you're seeing, Apple ने dual driver audio pods position किए हैं next to each ear ताकि एक spatial audio experience मिले. However, क्योंकि ये device Apple के software and hardware ecosystem का ही हिस्सा है, one can also use second generation AirPods Pro with them. Surprisingly, Apple ने डिवाइस के बाहर भी एक स्क्रीन फिट करी है जिसका eyesight feature plays back the wearer's eyes to the outside world. This is for safety and connectivity. ये automatically भी wearer की eyes display कर देता है when someone approaches them. Guys, आप नोटिस कर चुके हैं कि this packs a lot, and by a lot I really mean a lot, because in this tiny space Apple has managed to put in tons of hardware able to process lots of data so quick कि यहाँ पे जो बाहर बहुत सारे cameras हैं, they are giving me a live feed
while being stitched together and the latency is like very minimal. अगर कोई मुझे बॉल फेंके तो मैं कैच कर सकता हूं बड़े आराम से. And you know this device, it runs on Apple's Vision OS. Basically, you can create different environments. If you want to use this as a big screen for your Mac, maybe you want to use this to watch movies. It has amazing speakers, तो आप अपनी बड़े स्क्रीन पे मूवीज को एंजॉय कर सकते हैं. और let's say you want to use some apps जहाँ पे you want to immerse yourself in full augmented reality, you can do that. This device, I would say, would change the way we compute. मतलब आप imagine कर सकते हो. I'll just take it off. Just think about it. I was wearing this. मैं अपने चेहरे पे एक कंप्यूटर पहन के आपसे बात कर रहा था. Back in the days, we used to have those old computers. फिर धीरे धीरे करके पोर्टेबिलिटी का जमाना आया. We all had laptops. Moving forward, laptops से फिर iPads वगैरह बने, tablets बने, smartphone today, you know, whatever we have is no less than a very powerful computer. But this is the future wherein you just wear your computer. आपको कोई monitor नहीं चाहिए because inside we have really high-res screens, and this device is just the one that you need for all, you know, this modern age कि आपने अपना computer पहन लिया है और आप चलते फिरते computing कर रहे हैं. और just to tell you, this is not the first time any brand has done it. We have seen numerous gadgets, similar styles, similar concept by various brands, but finally Apple has made entry in this field of spatial computing. That's what Apple likes to call it with this Vision Pro. And थोड़ा भारी feel होता है because it's made up of aluminum and glass. Feels good quality, but at the same time थोड़ा heavy feel होता है. But battery pack आपकी pocket में है पीछे, तो इसको you will forget after some time. The experience, or I would say the cameras or the way it works, that's phenomenal. You can just see for yourself कि इससे आप क्या-क्या काम कर सकते हैं with even more insightful things about this Vision Pro coming to you now. Vision OS में आप shared spaces पे काम कर सकते हैं. So this can look like multiple apps open on your desktop, but यहाँ पे these windows, they're floating in the air. Of course, you can change and control these windows and everything that happens within these windows as well. Your selection happens by looking at things क्योंकि आपकी eyes track हो रही हैं. And your selection activity happens by clicking your fingers just like a tap. So browsing the internet, watching a video on YouTube, that is 2D. But interacting with 3D models in supported applications actually 3D experience ही है. एंड अगर आप पहले भी एप्पल प्रोडक्ट्स यूज कर चुके हैं तो familiar apps like Apple TV, Apple Music, Mail, Messages, Safari, Photos, Keynote, आपको these and more मिल जाएंगे. And of course, Siri is there and is a very helpful addition that helps get things done just by voice. And just by turning the crown, आप complete immersion and see-through choose कर सकते हैं. Because platform अभी नया है, apps and games are showing up slowly. But we can't wait for some of our favorite games to come to the Vision Pro. Now friends, all this amazing hardware of the Vision Pro combined with all its amazing software features is priced at $3,499. As of now, the availability, as I told you, is just in the United States, and even to use it, you'd want to have an Apple ID with the region set to United States because Apple ने थोड़ा सा इसकी availability को भी limit किया है, but it will come to India. थोड़ा time लगेगा, maybe the end of this year, maybe early next year, and the pricing in India, in my opinion, should range, you know, in between 3.5 to 4 lakh rupees for this device. So very premium, very unique, at the same time very powerful as well. So let's see what do we have in the field of spatial computing moving ahead, because I'm sure कि एक बार Apple ने जब शुरू कर दिया है, we'll definitely have many more brands jumping into this field और हमको इस तरह के devices और ज़्यादा common तरीके से देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं. Friends, if I tell you this name, Dr. Amar Gopal Bose, क्या आपके दिमाग में कुछ क्लिक होता है? Would you be able to figure out what's the background? What did he do? You know, he created a company, goes by his last name, जो कि आज की डेट में एक pioneer है in audio devices. Yes, I'm talking about the Bose Corporation. और ये start हुआ था approximately 60 years ago in 1964. And it was created by none other than Dr. Amar Gopal Bose. And today we all know how iconic these Bose products are.
स्पेशली जो उनकी क्वाइट कंफर्ट सीरीज है, नोन फॉर देयर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। और बाय द वे ये जो ANC जो आज हम यूज करते हैं, इसका भी हम क्रेडिट दे सकते हैं बोस कॉर्पोरेशन को ही, बिकॉज इट वॉज इन 1986 that they were trying out something new उस टाइम पे in terms of cancelling the outside noise and making the earphones experience even more premium। और हुआ कुछ ऐसा कि उस टाइम पे डिक रूटन और याना जो है वो एक फ्लाइट में थे, and they were the first people to do a circle around the globe non-stop, I mean a distance of 40,250 kilometers completed in around 9 days, 3 minutes and 44 seconds। और जो उनका प्लेन था, it was designed in a way that the noise levels would reach 100 decibels। I mean, would be like आप एक रॉक कॉन्सर्ट के फ्रंट सीट पे हो और इतना शोर आपके चारों तरफ आ रहा है। It's not just for few minutes, it was for 9 days। I'll just do a quick recap। और बोस जो है उन्होंने डेवलप किया कुछ इंटरेस्टिंग हेडफोन्स को। They wore those headphones and that was the reason they were able to complete the flight with comfort। And वहाँ से शुरुआत हुई that today you see in modern electronics, Bose is really considered as the brand जहाँ पे you get really amazing sound quality, great noise cancellation। वैसे आज की डेट में तो we'll have multiple products in the market जहाँ पे 1-2 हज़ार रुपए में you have these earphones with active noise cancellation। But just remember कि किस कंपनी ने उस चीज को शुरू किया और किस तरीके से शुरू किया, एंड हाउ दिस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट थिंग्स वर्क, दैट जो चीज एक टाइम पे बहुत रेयर थी, आज शायद हम सभी के जेब में एक ईयरफोन होगा जहां पे हमको नॉइस कैंसिलेशन इनबिल्ट मिलता है। डिड यू नो दिस? इफ यस, अमेजिंग। इफ नो, प्लीज लेट मी नो, ड्रॉपिंग इन ऑल योर ईमेल्स at tg@ndtv.com। और मैं आपके ईमेल्स पढ़ता हूँ और इस ब्रेक के बाद आपसे मिलता हूँ, बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टेक टिप, and I'll answer your questions as well in the segment Ask TG। See you after this short break। Hello guys, welcome back after the break to your favorite show Gadgets 360 with Technical Guruji, जहाँ पे I give you clean knowledge about all the gadgets around you and we try and explore them in ways that only we can, और आपको मिलती है सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल साफ साफ। वैसे साफ से याद आया, लेट्स टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग टेक टिप। जब भी हमारे फोन के स्क्रीन को साफ करते हैं, at times looks like that we are doing it wrong। मतलब आप अपनी शर्ट से ऐसे रगड़ के साफ करें, ऐसे साफ करें, वो तो एक ऑप्शन है, but then it's not really clean this way। अगर आपको स्क्रीन को क्लीन करना है, there's a certain way of doing it। First, I would recommend that you use a proper screen cleaning liquid। Second चीज जो शायद हम अक्सर नहीं करते हैं, you need to turn your device off because you do not want that liquid to go in from some opening और शायद वो अंदर शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर दे और आपका जो हजारों लाखों का वो इंपॉर्टेंट फोन है वो शायद खराब हो जाए। Another thing that you would never want to spray directly onto your screen, वो जो लिक्विड है वो आप सीधा यहाँ स्प्रे नहीं करेंगे। You need to use a microfiber cloth and the reason is कि उसमें आपको कोई लिंट नहीं मिलता है और आप उस लिक्विड को उस क्लॉथ पे स्प्रे करते हैं in very limited quantities and then you do a complete wipe। और ऐसे गोल गोल मत घुमाइए, the up down motion really helps। And once you are done with the wet cleaning, just use the dry side of your microfiber cloth और उसको आराम से साफ कर सकते हैं। You will get good results because sometimes things as simple as cleaning your phone screen with all the things that it मतलब झेल लेता है हमारा फोन। वैसे तो टाइम पे साफ तो करना चाहिए बट सही तरीके से साफ करना बहुत जरूरी है। That's my tip for you to clean all your screens, could be your phone, your laptop, your iPad or even your television। This is the right way। Okay, so guys, it's finally time जहाँ पे हम बात कर लें थोड़ा सा Q&A के पॉइंट ऑफ व्यू से and I'm gonna answer your questions जो आपने पूछे थे and I mean this is one of my personal favorite sections जहाँ पे मुझे मौका मिलता है आपसे बात करने का और आपके सवालों का जवाब देने का related all about gadgets। So let's see what we have this week। सर, हमारे नए फ़ोन में ही हेल्थ का ऐप है जो बता देता है कि हम कितना चले हैं, तो फिर अलग से स्मार्ट वॉच लेने की ज़रूरत है क्या?
Interesting question, because nowadays most modern smartphones, they have this kind of app built in जहाँ पे you can track your steps, your sleep, or like, all these things. Then what's the need of a smartwatch? But the thing is कि जो phone है वो हमेशा आपके पास नहीं होता है. Maybe the phone is on your desk and you are walking around, तो वो steps कैसे count होंगे? It gives you some data but not a complete accurate data. What a smartwatch would do is that it would track all your activities round the clock. आपकी हार्ट रेट क्या है, आपका ब्लड ऑक्सीजन क्या है, आपके सोने का टाइम और उठने का टाइम क्या है, आपके एक्यूरेट स्टेप्स क्या हैं. So that's the reason that you'd want to have a smartwatch for even more detailed and accurate data. Mobile phone might give you a brief, details basis of how's your routine, but अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए, a smartwatch is really essential. My friend, let me tell you, it's very difficult for me to recommend you a best phone, because best might be different for different people considering की requirements क्या हैं. Maybe आपको अगर कैमरा अच्छा चाहिए तो I would say the Realme 12 Pro Plus is an amazing phone with amazing camera. But अगर आपको performance चाहिए, I might say the iQOO Neo 9 Pro would be an amazing phone. So depends on what exactly you are looking at. आपको एक phone में क्या चाहिए? If you want a nice software experience, I would say go with a Samsung phone. So it depends कि आपकी requirement क्या है. Same goes for audio, because maybe you'd want heavy bass, maybe you'd want a different kind of experience. But audio में I can say that the Oppo Enco series is doing really good in that price bracket. But mobile phones थोड़े subjective हैं, तो आप अपने requirements थोड़ा filter कीजिए, and then you will be able to choose your perfect smartphone. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. क्यूआर कोड कैसे काम करते हैं? अगर दो लोगों के एक हो गए तो पैसे का नुकसान नहीं हो जाएगा? नुकसान नहीं होगा, बिकॉज दो लोगों के एक हो नहीं सकते हैं. QR कोड्स बेसिकली शॉर्ट फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड्स, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से काम करते हैं, जहाँ पे the information that you are trying to bake into that QR could be a number, could be a web link, could be maybe a Wi-Fi password, let's say, all these things जहाँ पे आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं. maybe a QR कोड for your Instagram profile. तो आप जब इनको बनाते हैं, there is a specific pattern जिसके थ्रू इनका पूरा डिजाइन किया जाता है. At the same time, यहाँ पे काफी सारे redundancy और safety checks भी होते हैं इनबिल्ट. कई बार आपने नोटिस किया होगा when you are paying to someone, और वो जो QR कोड है वो थोड़ा सा मिट गया है कहीं जगह से, या उसके ऊपर लेट्स से कुछ थोड़ा सा मार्किंग्स आ गई हैं, बट स्टिल इट वर्क्स, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में ऐसे मैकेनिज्म भी होते हैं कि अगर कुछ थोड़ा सा QR कोड डैमेज भी हो जाए, स्टिल द इंफॉर्मेशन इज रिट्रीव्ड नाइसली, और QR कोड कभी सेम नहीं होंगे. तो डोंट वरी, आपका पैसा जहाँ पे आप भेज रहे हैं वहीं जाने वाला है. Hello Gaurav, I hope you are doing well. I wanted to know your views on Bluetooth helmets for music. Are they safe? I would have a mixed response to it, to be honest. I mean, as a way to take away all your boredom while you are riding a bike, आपको लगता है कि आप गाने सुन सकते हो, don't need to use earphones, आपके हेलमेट में अंदर ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं और आप आराम से अपने गाने सुन सकते हो. It's good for that. But at the same time, you need to be केयरफुल अबाउट कि आपको क्या आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उनकी आवाज ठीक से आ रही है या नहीं. इट्स द सेम थिंग एज कि आप एक कार में हैं और आपने फुल वॉल्यूम में अपना अगर स्टीरियो प्ले किया है, द प्रॉब्लम इज कि आपको केवल वो म्यूजिक की आवाज आ रही है. मे बी समवन हॉकिंग एट यू, मे बी सम इमरजेंसी साउंड्स, या मे बी कोई अगर आपको आवाज लगा रहा है तो आपको उसकी आवाज आएगी ही नहीं. तो सेम वे इफ यू आर यूजिंग अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक जहां पे आप गाने सुन रहे हो, तो मेक श्योर कि जो लेवल्स हैं वो आप ऐसे रखो कि आपको गाने की आवाज तो आए, एट द सेम टाइम जो आसपास का ट्रैफिक है आपको उसकी आवाज भी आए, बिकॉज इट्स एसेंशियल फॉर सेफ्टी. So guys, that's all for this week's Gadgets 360 with Techni Guruji. I mean, what an amazing episode. मुझे personally बहुत मजा आया, as with every episode, because हम हमेशा इतने सारे gadgets को blend कर देते हैं, और स्पेशली जो टेक टिप है ना वो मुझे बताने में बहुत मजा आता है, बिकॉज यू नो व्हाट, मैं खुद भी जब उनको इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी लाइफ में, मुझे लगता है कि हाँ वो यार दिस इज इंटरेस्टिंग नॉलेज जो मुझे शेयर करना चाहिए. सो सेम वे आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू शेयर and spread the awareness about this show, that for all the people who love gadgets, this is the place to be, जहाँ पे हम बात करते हैं gadgets की in a complete 360 degree approach.
वैसे मैं आपसे मिलता हूँ next week with some even more fun and some interesting gadgets, by the way, coming soon to you, especially in the next episode. I'm gonna see you next time. Have a good day.